बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है द सिग्निफिकेंस ऑफ रामा। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। In many ways, Rama is representative, or we can even say an embodiment of what this culture stands for. This is a culture where we don't count the value of accumulations one has. We don't count one's achievements in the world, nor do we count one's victories in war. But the most important dimension is how profound is the freedom that one has achieved within themselves. What is your level of mukti in your life? How profound is your freedom from variety of things that a human being can be afflicted with? If you look at Rama's life, I want you to understand, when Ram in Ayodhya, well, some things went wrong and went to the forest and his wife kidnapped by the Sri Lankan people, not LTT, well before that. LTT? मेरे ख्याल में And when he started moving south, अगर मुझे when he गलत नहीं लग crossed रहा the boundaries or the borders of Andhra Pradesh and Karnataka, we called him Rama. The moment he entered Tamil Nadu, we called him Raman. ओके So when I say Rama, don't get confused. In south, he is not Ram, he is Rama. So if you look at Rama's life, he lost his kingdom. His kingdom was taken away, though he was rightfully coronated as a king. His wife was taken away. Later in his life, his children were taken away. Normally for most human beings, if any one of these things happen, they will be broken for life. True. But here is a man, though all these things happened, and he stood up to do the karma that he has to do, even to the extent of fighting battles, but never conquered by angst or animosity or anger. It is for this reason that we are bowing down to him. He is not a super success, it's a series of disasters. In spite of this disastrous life, the negativity cannot conquer him. He is free from these things. It is this one quality for which we are bowing down to him, because in this culture, our ultimate goal is not God, our ultimate goal is not heaven, our ultimate goal is mukti or moksha. Liberation or freedom is the highest goal in our lives. This is the significance of who we are in this culture. Everywhere else, people want to go to heaven, but we know, even if we go to heaven, we will get bored after some time. Hello? Even in heaven we can get bored. So we foresaw those possibilities and see the ultimate thing is liberation, to be free in every possible way. And anyway, there is no proof with any of you that you are not already in heaven and making a mess out of it. First of all, anybody who talks about a better place elsewhere than where we are right now, it is a crime. So this is why Rama's life is most significant.
the world throws many things at you. Entire life is full of disasters coming his way, one after another. But he is not ruled by those disasters. Those outside situations does not decide who he is, he decides who he is. This is the essence of being an ultimate human being, that the outside will not decide who you decide who you are. This is a privilege. This is a privilege only accorded to human beings. There are many other creatures. Today they say there are over 1 trillion different kinds of life on this planet. Okay. Not million, trillion. Trillion. Of all these creatures, from the smallest to the biggest, for them, they live according to the dictates of their instinct. Instincts of survival rule them. This is the reason why there are wonderful tigers, there are lions in Gujarat, there are elephants in the south. But we did not call a lion being, a tiger being, an elephant being, only you. We refer to you as human being because you are supposed to know how to be. Don't congratulate yourself too soon. You're supposed to know how to be. That means you can decide how to be. We cannot decide what the world will do to us, but we can decide what we do within ourselves. So this is what being means, that you know how to be. Rama is 100% representative of this dimension. He knows how to be. Kingdom taken away, wife taken away. Well, I was in Andhra Pradesh, in a small town called Nellore, with our present vice president on stage with me on that day. A little girl, a 14-year-old girl, stands up and asks me, "Sadhguru, they say Rama walked all the way from Ayodhya to Sri Lanka. Is such a thing possible? Or this is all just a story? Is it really practical for a man to walk from Ayodhya to Sri Lanka?" I said, "See, you are just a 14-year-old girl right now. You will grow up and one day you will find a man for yourself. Do you want that kind of a man? Suppose you are lost, he will walk all the way and look for you. Or do you want a man who will say, okay, she's gone, let me find some local solution for myself? What kind of man do you want?" She says, "I would like a man who walks all the way." I said, "That's what he did. He is a king, he could have found a local solution, but no, his wife is so dear to him that he walks all the way, fights a battle, gets her back." Well, there are arguments these days, but this man is a male chauvinist. Because of his pride or his kingdom or whatever nonsense, he again sent her back to the jungle. This argument came up here in Gujarat in one of your universities when I was part of the Youth and Truth movement. So I asked them a simple question. We are going through various situations in our country. Though this is a nation of great possibilities, we have still kept it as a nation of great problems. Though at one time we were the most prosperous nation on the planet, today we are coming up now, but still a large segment of population is in poverty. When it is like this, would you like a king or a leader of this nation who will place the well-being of his citizens and nation above his family,
and dear ones in his life? Or would you like somebody who will do everything for the family and forgets about the nation? Listen, that is not it. Why should he send his wife? You must understand, when they say a dhobi was speaking about his wife or the queen, a queen is not just a wife. She has a place in the kingdom. She is not just another woman. A queen is like a mother to that kingdom. Now, it is not in the story, it may say dhobi was speaking about it. A dhobi speaking means it is general gossip in the town. Everybody is speaking about it. They are wondering, how can she be our queen mother? Now you have a choice, to hell with the citizens, I'll keep my wife, or for the sake of my citizenry, I will sacrifice somebody for whose sake I fought a war. A terrible war, a risky war, because you didn't have an army to fight a war. You just went with your brother to fight a war. All this you did for that woman, but now, for the sake of the nation and the sake of citizens, you sacrifice her. And when she is fully pregnant, for a king, children are very important because that is the continuum. Not knowing whether it's a boy or a girl or boys or girls, no sonogram in those days. And she goes to the jungle and delivers 2 boys and he does not know. For a king, this is the biggest disaster. He does not know that he has sons. And not only that, the situation evolves in such a way that he ends up fighting those children. The worst thing that you could do in your life is knowingly or unknowingly you kill your own children. This would be the most horrible thing that you could have done in your life. He almost did it, but still remained without angst, animosity or anger, doing what is needed. Though it causes much pain in your heart, you don't make this pain the basis of what you do with the rest of the world. This is what he represents, this is what should become the ideal of this nation and the world, that if you poke me, I will poke you, then everybody will be poked, because inevitably something will poke you. When you walk through this life, there are a lot of poking people. But as you raise in your stature, if you become the poking kind, then everybody will be poked. So, his life is not history, it is a lesson for the future of this nation and for this world. Thank you very much for having me here. जब राम जी की बात की जाती है, जब उनकी ज़िंदगी के बारे में आप देखते हैं ना, तो नो डाउट भाई उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी जो है आपको कठिनाइयाँ जो है वो देखनी पड़ती हैं। मैं समटाइम सोचता हूँ कि हम अगर आज के युग की बात करें और पहले युग की अगर बात की जाए, तो अगर आज के टाइम में आप किसी ऐसे इंसान को जो युवराज हो और उससे आप कहें कि भाई आपको जो है ना निकाल दिया जा रहा है किंगडम से, तो वो अगर किंगडम छोड़ कर भी जाता है ना, वो एक बड़ी लेविश लाइफ अपने साथ लेकर जाता है। वो इस तरह जाता है कि भाई आने वाला टाइम जो है ना उसकी जनरेशन का बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। लेकिन अब जब राम जी की ज़िंदगी के बारे में देखते हैं, तो भाई वो जिस तरह वो अपनी किंगडम छोड़ के जो है जंगल में जाके उन्होंने वनवास काटा और उसके बाद सीता जी के लिए उन्होंने एक जंग लड़ी, तो भाई आपको जो है ना बहुत डिफरेंस नज़र आता है आपको पेशेंस में, आपको ज़िंदगी के सफ़र में। बिल्कुल, मैं कहूँगी कि उनको ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बोला जाता, और उनका जो धर्म जिस टाइम पर जिस तरह से रहा है उन्होंने उसको पूरा किया है। सो मैं बिल्कुल इस चीज़ से अग्री करूँगी कि आपको एक लेसन मिलता है उनकी लाइफ से। आपको सबसे ज़्यादा एक चीज़ पता चलती है कि धर्म क्या है और आपको किस
तरह से उसके लिए फाइट करनी है। मैं जिस तरीके से सदगुरु जी ने समझाया, मुझे लगता है आज की वीडियो में ना हम लोगों को शायद सबसे अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि यूजुअली सदगुरु जी की जो बातें होती हैं और जिस तरीके से वो बताते हैं उसको समझना, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डीपली उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, फिर जाकर आपको वो बात जो है वो समझ आती है। और समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ आ रही है लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बट जिस तरीके से आजकल का टाइम चल रहा है और उन्होंने एग्जाम्पल सेट, मतलब एक एग्जाम्पल रेजोनेट किया, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम लोगों को दुनिया के मुताबिक नहीं चलना। दुनिया के मुताबिक अगर हम लोग चलेंगे तो कभी भी चीज़ें जो हैं वो सही नहीं होती। हमारे अंदर हम किस स्टेट में रह रहे हैं वो ही हमारे लिए बेहतर है और हमें उसी पर काम करना है, और इसी वजह से कोई नेगेटिविटी भी हम पर असर नहीं करेगी। वरना जिस तरीके से जिस स्थिति में राम जी थे, मतलब उनको वनवास पे जाना पड़ा, फिर उनकी जो वाइफ है उनको उनका जिस तरीके से आप कह लो, हिंदी में क्या वर्ड बोलते, किडनैप करने को अपहरण किया गया, एग्जैक्टली। फिर उसके बाद भी जब आप देखो कि जब सीता जी आई उनकी भी परीक्षा ली गई, फिर जैसे बताया गया कि मतलब जंगल में जाकर उन्होंने लव और कुश जो है हाँ को जन्म दिया। और वैसे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इस चीज़ को रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने आज, ये एक कोइंसिडेंस ही हम समझ लें कि हम लोगों ने आज ही बटूर की वीडियो देखी, लव एंड कुश, जहाँ पर उनका जो जन्म स्थान है वो देखा और जहाँ पर सीता जी हैं उनको जमीन में समा गई। हाँ, पता नहीं क्यों मैं वर्ड जो है वो भूल जाती कि क्या बोल रहा है यहाँ पर, लाइक हाँ वो ज़मीन में समा जाती हैं, मतलब जिस तरीके से। और वैसे मुझे नहीं पता था कि राम जी को नहीं पता था कि जो है उनके बेटे हुए हैं, तो मुझे भी नहीं था हाँ पता। तो ये इतनी लंबी एक परीक्षा उनकी भी चली। और अगर मतलब सब कुछ उस तरीके से होता कि लाइक जैसे हम एक आम इंसान है तो एक नेगेटिविटी का एक बहुत बड़ा फेज है, ठीक है, जो मतलब आपको डिप्रेस कर सकता है, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को निभाया। क्या क्या चीज़ें जिस जिस टाइम पर थी उसके अकॉर्डिंग वो चले। बट मुझे ऐसा लगता है कि रामायण में शायद बहुत कुछ ऐसा है कि जो वाकई में हम लोगों को नहीं पता अभी तक कि आगे क्या हुआ, किस तरीके से किंगडम चली और सीता जी के वापस आने के बाद सब कुछ कैसे हुआ। तो मुझे लगता है कि चीज़ें जितना आप पढ़ते जाते हो उनसे कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखते रहते हो। लेकिन आज के टाइम में मैं ये ज़रूर बात करूँगी कि हम पे नेगेटिविटी इतनी जल्दी असर करती है कि अगर कुछ भी छोटा सा होता ना तो हम अपने ऊपर उसको हाँ ऐसे ले लेते हैं। हमारी आत्मा इतनी वीक हो चुकी हुई है कि हम उसको बेयर ही नहीं कर पाते और हम लोग जी डिप्रेशन में चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग थोड़ा पॉजिटिव होकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, ऑब्वियसली उसके लिए बहुत ज़्यादा आप कह लो कि जैसे हम योगा कर सकते हैं, हम लोग मेडिटेट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हम पर फिर कम असर करेंगी। यार आज सुबह जो है ना मैं एक छोटा सा क्लिप देख रहा था सफिया बीबी का, शायद आपको मालूम हो। नहीं नाम बताओ फिर पता चलेगा। तो सफिया बीबी, सॉरी मतलब काम बताओगे तो शायद पता चल जाए। वो बहुत अच्छी वो जो है ना बातें अक्सर जो है वो उनकी शॉर्ट क्लिप्स आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। मैं आज सुबह उनका एक क्लिप देख रहा था, जो व्हाइट हेयर वाली है। हाँ, अच्छा, उनका नाम सफिया है। हाँ, ओके। तो मैं उनका एक क्लिप जो है ना वो देख रहा था, उसमें वो कह रही थी कि आप जो है ना यानी आजकल के इंसान जो है ना वो अपने बाहरी जो एक यानी जाहिर होती हैं चीजें उसको जो है ना ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन आप तब तक सही नहीं हो सकती जब आप अंदर से जो है ना सही ना हो। तो देखा जाए तो आज की वीडियो में भी जो है ना आपको कहीं ना कहीं वही बात जो है वो सुनने को मिल रही है कि आपको अपना अंदर से अगर आप ठीक करते हैं ना, बाहर की दुनिया आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो सही जो है वो लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है ना मसला ही यही रहता है कि हम जो है ना अपने आसपास की चीज़ों कहते परफेक्ट हो जाए, लेकिन हम अपने अंदर जो है ना वो झांक कर जो है ना वो नहीं देखते कि हमारी ज़िंदगी जो है वो कैसी गुजरी है। अभी जो है भाई हमने देखा कि भाई राम जी जो हैं उन्होंने एक बहुत लंबा सफ़र जो है वो किया, रास्ते में परेशानियां देखी, दुख देखे, और लिटरली आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं आपको कुछ ना कुछ नया जो है वो जानने को मिलता है। अभी जैसे हम रामायण की बात करें तो रामायण हमने जितनी भी देखी है वो हमने एक बहुत लिमिटेड स्केल पर देखी हुई है, लेकिन जब आप जैसे एक पूरी सीरीज़ जो है वो बनी हुई है, जो आप रामायण पुरानी वाली देखते हैं, तो आपको जो है ना फिर एक मैं कहूँगा कि डिटेल में पता चलना वो आपको तभी पता चल सकता है। अच्छा, एक और चीज़ बीच में जो जिक्र किया गया मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप एक लिबर्टी लेते हो ना क्वेश्चन की और एक डिफरेंट एंगल से समझाने की कोशिश करते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी जैसे बीच में जन्नत की बात की गई, मतलब वाकई में आपको क्या पता हो, आप अभी भी जन्नत में रह रहे हो, आपको नहीं पता, और अगर इससे भी कोई
बेटर प्लेस है, प्लेस मेरे मुंह से निकले नए प्लेनेट कहने लगी है। हाँ, अगर इससे भी देखो मल्टी यूनिवर्स हाँ, का तो हर जगह पर मतलब अब साइंस भी इस चीज को जो है वो प्रूव कर चुकी हुई है। सो हमें क्या पता, तो मुझे लगता है कि अभी जहाँ पर हम हैं एटलीस्ट वहाँ पर तो हम अच्छे रहे। और ये चीज़ समझना मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं इस चीज़ हम खुश नहीं रह पाते। नहीं मौसम, मुझे ऐसा लगता है कि ना हम लोग सनातन धर्म को समझते ही नहीं है उतना डीपली जितना कि आपको समझना चाहिए। क्योंकि जब आप उसको समझना शुरू करते हो ना, आपके बहुत सारी लेयर्स जो है ना वो खुलना शुरू हो जाती हैं। आप डिफरेंट वो जैसे डायमेंशंस की बात की गई है ना, आपकी वो चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा भी अगर हम देखें ना तो हम लोग जो है ना वो खुश रहना भी नहीं चाहते। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर पता नहीं क्या होता है कि वो ना खुद खुश रहना चाहते हैं ना वो दूसरों को खुश देख सकते हैं। तो यही चीज़ है ना, कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यही चीज़ है कि जो हम लोगों को बीच में बताया भी गया कि हम लोग अगर कोई हमें पोक करता है तो हम इन रिटर्न उसको पोक करेंगे, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। सो चीज़ें जो है वो मतलब अंदर से सही करने की ज़रूरत है। अगर कोई नेगेटिविटी असर कर रही है लाइक आप पर, तो इसका मतलब है कि आप अंदर से खुद को बेहतर किए ही नहीं है। लेकिन हम ऐसे, खैर ये मेरे साथ भी होता है, मैं ऐसी बात करूँ, नेगेटिविटी का मेरे पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है। हाँ, लेकिन ये कि जो लोग एक उस स्टेट में आ जाते हैं तो उन पर फिर नेगेटिव चाहे जितनी भी मर्जी चीज़ें हों उनका असर नहीं होता, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है उस नेगेटिविटी से कहीं ऊपर जा चुकी होती है। एनीवे गाइस, बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा। और इसी के साथ मैं वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस अपडेटेड। गुड बाय।